Good evening to all of you. So today we are going to learn about X-ray photoelectron spectroscopy. तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरे जनरेट कैसे किया जाता है। एक्सरे इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। आप लोग मेडिकल वर्ल्ड में जब भी आप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, एक्सरे बहुत ही कॉमन टेक्निक है, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन एक्सरे का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग एंड टू दिस सैम्पल कैरेक्टराइजेशन, टेकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस से लेके एलिमेंटल आइडेंटिफिकेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने तक बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। So at the very outset I would like to tell you how the X-rays are generated. So basically this is a schematic which tells you there is a heated filament. Okay, here that filament is there. ये फिलामेंट और इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। सो दिस इज थर्मोआयनिक एमिशन, मतलब हीट करके इलेक्ट्रॉन वहाँ से चल पड़ेगा। एंड देन इट विल हिट अ टारगेट ओवर हियर विच इज समटाइम्स कॉपर, समटाइम्स कोबाल्ट। यूजुअली कॉपर का काफ़ी कॉमन है, कॉपर रॉड। तो कोई भी मेटल को हिट करेगा, उसके बाद वहाँ सरफेस से एक एमिशन होगा, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा जिसकी मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, सो मच शॉर्टर देन दिस थिंग। सो जैसे कि अल्ट्रावायलेट में आपका कितना नैनोमीटर होता है, यू हैव कल हम डिस्कस कर रहे थे अल्ट्रावायलेट के लिए 58 नैनोमीटर वाला यूज़ किया गया था, हीलियम लाइन फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 58 नैनोमीटर वेवलेंथ, उससे भी शॉर्ट वेवलेंथ का जो रेडिएशन होगा वो एक्सरेज कहलाता है। इट इज़ यूजुअली इन द रेंज ऑफ 0.3 नैनोमीटर और 1.5 अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सॉरी 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। सो यू कैन इमेजिन 0.15 नैनोमीटर उस रेंज में चला जाता है। So you are talking about in that range 0.3 to 0.15 nanometer, or you can say 3 angstrom to 1.5 angstrom। उस लेवल का वेवलेंथ होता है, बहुत ही शॉर्ट, जो कि एटॉमिक जो लैटिस स्पेसिंग होती है उसको भी उसके बराबर का हो जाता है, और इसीलिए आप एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं क्रिस्टल्स में। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ एक्सरेज। सो ये एक्सरे इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है when high speed electrons hit the metal target. Okay, so this is the more detailed thing of how it is generated. So heated filament, so look at this picture, dotted line representing the thermionic emission of electron from the heated filament. It hits the metal target, tungsten, copper, कुछ भी हो सकता है, and then so it is, everything is in vacuum, and then X-rays are emitted. These are the X-rays, red colors thing that you see are the X-rays. So what is happening here? Sorry. So what is happening here? In the metal, the highly energetic electron knocks out this electron from the K shell. K shell जो सबसे lowest closest to the nucleus, उस K shell से ये इलेक्ट्रॉन बीम चल के आई और इसने ये this electron is knocked out and it knocked out. To fill the vacancy, this electron from the L shell comes in, and in this process the excess energy is emitted. The difference of energy जो L और K के बीच का difference है वो emit होगा, and that is known as X-ray. इस तरह का कोई भी higher और एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स जब इस वैकेंसी को, कोर लेवल की वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा,
जो कि नॉकआउट हो चुका है, तो इस तरह की एनर्जी ये जनरेट होती है। इसको और ध्यान से समझने के लिए ऐसे देखिए, इसका नामकरण कैसे किया जाता है। हाउ डू वी नेम दीज एक्स रेज। आपने देखा होगा, अगर आप बुक पढ़ेंगे कई जगह, कहीं के अल्फा, एल अल्फा, इस तरह से के बीटा, ऐसे नेमिंग होता है। तो नेमिंग कैसे किया जाता है? So usually, so if suppose electron is being knocked out from the K shell, this is the K shell of this, so K shell से electron is being knocked out, ये arrow देखिए इधर गया, ठीक है। So this, the electron is getting knocked out, and to fill the vacancy, electron from this L shell, this is the L shell that you are seeing, एल शेल यहाँ पे आ गया, एल शेल से इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आया। तो इसमें जो रेडिएशन एमिट होगी, दिस विल बी कॉल्ड एक्सरे, एक्सरे के अल्फा। अगर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग नॉक्ड आउट फ्रॉम द एल लेवल, एल शेल, सो यहाँ पे देखिए, दिस इज द एल के और के शेल, दिस वाज एल शेल। So L shell से अगर इलेक्ट्रॉन is being knocked out, and to fill the vacancy, the electron from the next higher level, KL, this is M, so M level से इलेक्ट्रॉन आके इसको fill कर रहा है, and then because of that the energy is emitted, this is called, so this emitted energy is X-ray, and this will be called L alpha. So डिपेंडिंग ऑन कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है, उसकी बेसिस पे हम इसको के अल्फा, एल अल्फा एक्सरे कहते हैं। वी कॉल इट, वी नेम इट एज के अल्फा, एल अल्फा, डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम विच shell the electron has been originally ejected out. And ओके, सो अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, नॉकआउट हुआ है, और एल शेल से इलेक्ट्रॉन आके फिल कर रहा है उस वैकेंसी को, तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज बीन इनिशियली इजेक्टेड आउट फ्रॉम के शेल, इसलिए उसको के अल्फा कहा गया। अगर एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, सो क्रिएशन ऑफ वैकेंसी, क्रिएशन ऑफ वैकेंसी इन के शेल, के अल्फा, क्रिएशन ऑफ वैकेंसी इन बाय नॉकिंग आउट दैट इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, देन एल अल्फा, एंड इसी तरह से। और अगर इस तरह का कुछ होता है, देखिए K shell में vacancy is created in K shell, and to fill this vacancy the um, electron from the L shell is L नहीं, A K L M, ये K है, ये L है, M shell से आके इसको फिल कर रहा है, तो ये इसका नामकरण ऐसे होता है, K बीटा कहा जाएगा। K अल्फा नाम दिया जब हमारा के शेल में वैकेंसी थी, उसको फिल करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है। यहाँ पे के शेल में वैकेंसी है, तो के तो नाम में रहेगा ही, लेकिन जो फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एम शेल से आ रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हायर लेवल, सो वी आर calling is K beta. So this is the way we name it, and more detailed things are here. There is another phenomena that happens when so this is the way the electrons, X-rays are generated. It is a very cooled metal target on which highly energetic thermoionic the emission is electrons from a filament, heated filament, hit the metal target. Okay, so ये metal target को hit करते हैं, और actual design में you have to make space for something that is transparent to X-rays. तो ये window glass का नहीं बना होता है, ये बेरिलियम का विंडो होता है, जिससे आपकी एक्सरे आती है, आपकी इमेजिंग होती है, वो ग्लास का नहीं बना होता है। द थिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट टू एक्स-रेज इज बेरिलियम, एंड बेरिलियम इज यूज्ड एज अ विंडो, ठीक है। सो दिस,
So the X-rays that come out, so the electron beam is coming from this is the electron beam that you see. अब इसमें एक और चीज होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम चल के जा रही है, इट इज गोइंग टू हिट द मेटल टारगेट, मेटल के सरफेस पे जाएगा, फिर उसके अंदर जाएगा, इट विल गो मच पेनिट्रेट डीपर इन द मेटल लैटिस एंड इट विल go on knocking out the electron. बट जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है, इट विल ऑल्सो डिसिलरेट, उसकी मतलब उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और वो जो डिसिलरेशन होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस, मतलब वो तो जैसे कि धीरे धीरे रुकती है गाड़ी वैसे, कि पहले थोड़ी सी स्पीड, तो कंटिन्यूअस चेंज इन एनर्जी होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनी मूविंग चार्ज, एनी एक्सीलरेटिंग चार्ज विल लूज एनर्जी। ये मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पुरानी थ्योरी है। एंड सो रेडिएशन विल बी एमिटेड, सो एक कंटिन्यूम भी, सो ऐसा होता है, एक कंटिन्यूअस एमिशन होता है जो कि ओनली विच रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे go through the metal lattice, and this radiation of continuous range is called bremsstrahlung. um, so the picture is here. Bremsstrahlung is, so this kind of, so actual spectrum, when you plot wavelength on x-axis and intensity, so two things will be observed. The continuum is, this one is the continuum due to the deceleration of electrons, and continuous change in energy is there, and so that energy is given. So वो एक जो इलेक्ट्रॉन जो चल के आ रहा था, फिलामेंट से निकला था, वो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अ फ्री मूविंग चार्ज विल, if it is decelerated or accelerated, अगर वो if it undergoes acceleration or deceleration, it will lose energy and emit radiation. ये पुरानी थ्योरी है मैक्सवेल की, जो कि पहले रदरफोर्ड के टाइम में भी दिक्कत आई थी जब हम लोग क्वांटम की शुरुआत हो रही थी, ठीक है, तो वो सब बताया हुआ है। तो एक कंटिन्यूम रेडिएशन मिलते हैं जिसको कि ब्रेमस्टर्लंग कहा जाता है। ब्रेम्स इज द जर्मन वर्ड फॉर डिसेलरेशन, स्टर्लंग इज फॉर दिस। ऑन द टॉप ऑफ दिस you have very sharp lines, sharp peaks. This is this one and this one, ये दोनों के अल्फा के बीटा जो कह रहे थे। so this is the main thing, के अल्फा के बीटा, योर एक्स रेज विच विल कम इनटू यूटिलिटी। तो ये जो हाई इंटेंसिटी की दो लाइंस हैं, ये वो एक्सरे हैं जो आपको एक्चुअली जरूरत है। दिस इज द थिंग दैट इज नीडेड, ओके, हाई इंटेंसिटी लाइंस, okay. So this is the high intensity sharp peaks that observed, and so these are arising on collision of the incoming electron with the electrons in the inner shell of the atoms. So this is giving rise to these peaks, ये जो दो superimposed peaks है। So there are two things that is happening, ध्यान दीजिएगा, पीछे पीछे आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था थर्म हीटेड फिलामेंट से इस तरफ, और ये मेटल के अंदर गया। तो मेटल के सरफेस के बाद उसके अंदर जैसे जैसे जा रहा है, इट इज अंडरगोइंग डिसेलरेशन, एंड उस डिसेलरेशन की वजह से वो एक रेडिएशन एमिट करेगा जो कि कांस्टेंट एमिशन है, वो मतलब सॉरी कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा उस वेवलेंथ में, उसकी एनर्जी में। तो वो वाला रेडिएशन एक लो इंटेंसिटी का हमें दिखता है, विच इज कंटिन्यूअस। उसके अलावा जो हाई इंटेंसिटी का दो पीक्स आता है, दैट इज ड्यू टू द एक्चुअल इवेंट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, जो कि नॉकिंग आउट ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन, एंड सो इलेक्ट्रॉन बीम दैट नॉक्स आउट दिस इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल से जो आके फिल करता है, ये वाली एमिशन हमें के अल्फा के बीटा जो डिफाइन कर रहे हैं वो होती है। तो उसके अलावा साथ में अकम्पनिंग प्रोसेस इज व्हाट वी नो एज ब्रेमस्टर्लंग। So this is for, Stirling is for radiation, Brems is for deceleration, this is German word, और ये एक इवेंट है जो इसमें होता है। So a collision is takes place, an electron from an inner shell, an electron is expelled out, it is ejected,
an electron from the higher energy drops into the vacancy, and this is emitted as a photon, which we know as X-ray photon. So these X-rays can be used for photoelectron spectroscopy. तो ये एक्सरे का सोर्स के बारे में आपको बताया हमने. And this X-ray photon, जब भी X-ray, when the X-ray is incident upon your sample, it will knock out electron from the core levels. So core जो है, जो कि which is unaffected by bonding situation, different bonding situation. So ऐसे केस में अगर कुछ होता है तो आपको एलिमेंट की पहचान होती है, मतलब it is can be used as a fingerprint for the identifying different elements in a sample. इसी टेक्निक का दो नाम है, XPS भी कहते हैं, इसका भी कहते हैं. So one is X-ray photoelectron spectroscopy, the other name is electron spectroscopy for chemical analysis. इसका एक ही टेक्निक है और ये सॉलिड सरफेस पे यूजुअली किया जाता है. दिस इज डन ऑन सॉलिड सरफेसेस. So the picture says it all. You have X-rays incident upon it, and then so H mu is, this is your X-ray, इनकमिंग एक्सरे. यहाँ पे हम सोर्स की बात नहीं, मतलब मेनली ये सैंपल है, हमारा सैंपल है, और इस सॉलिड सरफेस पे इसको ये रेज इंसिडेंट है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज एजेक्टेड. दिस इज द फोटो इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन इज योर फोटो इलेक्ट्रॉन. ओके, और इसकी एनर्जी को हमें एनालाइज करना है. सो दिस गिव्स अस द identification of element. Also it tells you about the oxidation state of the element also present in a sample. So X-rays from which aluminium K alpha, magnesium K alpha, ये दोनों सोर्स यूज किए जाते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए. आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए यूजुअली कौन सा एक्सरे यूज होता है? कॉपर के अल्फा. ठीक है. सो इस तरह से, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग है. यहाँ पे इसलिए एल्यूमिनियम के अल्फा और Mg के अल्फा यूज किया जाता है. सो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी को हमें करना है, सो रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज सेम. एक बार इलेक्ट्रॉन इज, सो ओनली द डिफरेंस इज दीज एक्सरेज आर मच energetic as compared to almost 10 times more energetic than 10 to 100 times more energetic than ultraviolet rays. So you can think how so much energy they carry. They can knock out electron from the electron which are very close to the nucleus. जो न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी झटके से निकाल देते हैं. So they carry lot of kinetic energy, and when it is analyzed, the photoelectron is analyzed, the speed is analyzed, and from that spectrum is generated. So it tells you so binding energy is equal to h mu minus the kinetic energy. This is already known to you, the same concept which we have been using in UV photoelectron spectroscopy. Besides that, इस एनर्जी से आपको केमिकल जो बॉन्डिंग इंफॉर्मेशन है कि एक एलिमेंट दूसरे से बाउंड है और उससे उसके ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे इफेक्टेड होती है, वो केमिकल शिफ्ट के नाम से हम जानते हैं. यहाँ पे भी केमिकल शिफ्ट होता है. एनएमआर में भी आपने केमिकल शिफ्ट पढ़ा था, यहाँ पे भी केमिकल शिफ्ट आप कह रहे हैं. तो वो जो पोजीशन है, जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम में जो किसी ऑर्बिटल का होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का होगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, और वही एटम जब बाइंड करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो पोजीशन शिफ्ट कर जाती है. सो दिस शिफ्ट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. सो डिपेंडिंग ऑन how from the atom is bound to which other element, the binding energy may change, and so you will observe a shift in the position of the peaks of one particular element under different bonding situations. So this is called chemical shift. So these core binding energies are determined by the electrostatic interaction between electron and nucleus. So and then न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा, और एक चीज होगी
shielding of the nuclear charge from all other electrons in the atom, including valence electrons. So बाकी सारे मिलके उसको shield करेंगे, and that, so these two factors affect the energies. अगर shielding का pattern change हो रहा है, including the valence shielding due to the valence electrons, तो वो energy को core की जो binding energy है उसको affect करेगी. So it will also be affected by overall state of the molecule or atom, कि वो charge state में है, uncharged में, metal 0, metal plus 1 plus, metal 2 plus. So that electronic state will also affect, because nucleus overall जो effective nuclear charge है वो अगर change हो गया ionization से, तो उसको भी account में लेना पड़ेगा. That will affect the situation. So withdrawal of valence electron causes increase in binding energy. Of course, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करेगा ना उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो addition of valence electron will cause decrease in binding energy. So अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपने you are removing valence shell electron, तो कोर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या इफेक्ट होगा? So overall charge state has changed. So if you remove that electron, the overall, so ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब तो ऑक्सीडाइज स्टेट में वो न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा, न्यूक्लियस अंदर, न्यूक्लियस विल हैव अ ग्रेटर पुल, exert a greater pull on the concerned electron. वैलेंस जब वो चार्ज स्टेट में होगा, अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं मतलब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाता है. So creation of a cation and creation of anion. So अगर ऐसे स्टेट होते हैं तो obviously this will cause increase in binding energy for a particular orbital, electron in a particular orbital, and this will cause a decrease in binding energy. ठीक है, because this give you negative charge state, that is a positive charge state. So example यहाँ पे आप देखिए, lithium metal, lithium versus lithium Li2O. तो lithium has a certain electron density of 1s2, and then 2s electron density. So binding energy is lower due to increased screening of nucleus by 2s conduction, 2s electrons, 2s electrons. Okay. So even the valence shell electrons, 2s electron has, अगर आप इसके वो प्रोफाइल पे देखें, if you see the profile of 2s electrons, जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया था, you know that probability of 1s versus 2s, if you compare the two, 2s has a subnodal maxima in the probability peak. That means it will approach nucleus very closely, and so it will cause screening of the nuclear charge. That means electron can be easily removed. But अगर वो 2s का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने हटा दिया, निकाल दिया, then the electron will be, 1s electron is going to be very strongly bound to the nucleus. In such case, so ऐसा होता है जब लिथियम से लिथियम ऑक्साइड बन गया, तो लिथियम पे, lithium is in +1 state, the 2s electron density is lost, 2s electron density is lost to oxygen, वो ऑक्सीजन पे चला गया है. तो इसका मतलब now the 1s electron is being strongly attracted to the nucleus. In such case, what will happen? The binding energy for the 1s electron will increase. So you see, lithium 1s
lithium metal is here, Li2O. So 1s orbital of lithium in Li2O and lithium metal में. So left to right, it is energy is increasing. So it is moves to higher binding energy. So change in from this to this side is towards higher. We are not using the word ionization. Binding energy will be the correct word, because you are taking out electron not from an isolated atom, not from a gaseous atom, it is solid, crystalline solid, और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं. So this is the term that is used is binding energy, and from right to left the binding energy has increased. So there is increase in binding energy when the 2s electron density is lost to the oxygen, to the surrounding molecules. So there is overall net charge, effective nuclear charge increases, and the electron is, the 1s electron is attracted strongly to the nucleus. So अब उसको आपको ज़्यादा इफेक्ट करना पड़ेगा. So XPS spectrum looks like this. So this is also called photo emission. जब फोटोन स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन निकला, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फोटो एमिशन. So there are three steps in which this thing happens: photon absorption and ionization. So photon को पहले absorb होगा, फिर ionization, subsequently the electron is ejected, then this creation of the response of atom and creation of photoelectron, and third transport of electron to the surface. तो हम सॉलिड पे स्ट्राइक कर रहे हैं एक एक्सरे से, और when the this beam hit the surface, the photon is absorbed, ionization occurs, and a photoelectron is created, which is then transported to the surface. अंदर से इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड में 2-3 लेयर अंदर जाके भी वो बीम तो पेनिट्रेट करेगा, अंदर तक जाएगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, वो चल के ऊपर तक आएगा, ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस, और फिर सरफेस से लीव कर जाएगा. देन इट विल लीव द सरफेस. सो दीज आर थ्री इवेंट्स दैट हैपन. Initial state, everything. So in a solid AB type lattice is there, and the A atom, when the X-ray is incident upon it, it knocks off the electron and it gets ionized. Okay, then the electron is then travels to the surface. So photon absorption, ionization, this happens. Molecules absorb the photon, causing the energy of photon to be transferred. So it gets excited. Response of atom. In this case, in this event, what will the excited electron will travel to the surface of the molecule of the solid sample that we have seen. During this step, the excited electron may collide with other particles, may not collide with other particles, and if it collides, it will lose some energy. Then the excited electron will escape the surface. Surface तक पहुंच गया, surface को छोड़ देगा molecule into the vacuum, and there we detect it. So these are the three steps in which this event happens. The in X-ray photoelectron spectroscopy, these are the three events involved in generation of the photoelectron. Chemical shift. So we are, as a chemist, we are more interested in learning about the chemical shift variation in XPS. So you have, just a moment. So exact binding energy will depend on the कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा. It will also depend on the oxidation state, local, chemical, physical environment. So oxidation state of the
of the atom and local chemical environment. So changes in any of these things, like change in oxidation state, change in the bonding situation, it will, so same oxidation state but different bonding situation. So carbon bound to fluorine, carbon bound to oxygen, carbon bound to chlorine. So oxidation state may remain the same, but depending on the exact nature of the other atom nearby, there will always be a small shift in the binding energy. So peak position shift, and this we call chemical shift. So these are the things that will be easily observed in X-ray photoelectron spectra, and we'll see some examples, and that will be clear. So when we have in higher oxidation state, positive oxidation state, so the binding is, it is, मतलब ये तो expected है कि अगर कोई positive oxidation state में है, so it will attract the electron strongly. So binding energy, it will it will be very difficult to take away the electron from something which is already positive. So किसी molecule पे अगर positive charge है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा. So actual में आपका effective nuclear charge is high, and that is uh, keeping the electron tightly bound, and so you require greater amount of energy, so higher binding energy is required. So ये एक rule of thumb आप इस तरह से ले सकते हो कि ये तो simple logic है जो आपको समझ में आना चाहिए. So there is additional thing that will happen. एक तो हो गया कि निकालने में दिक्कत है, अब वो निकल रहा है तो as the electron is emitted, photo emitted electron, ये कौन सा photo emitted electron is coming to the surface, it may interact with the ion core, and this will affect the its detection, its anything that you try to. So it is very unique thing about this XPS is that it can differentiate between the different oxidation states and chemical environments, which very few other techniques can do. And this is the strength of the XPS technique. So uh, so so there's this is the key how you can resolve the different chemical shift values, the peak, कितनी अच्छे से आप जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं बॉन्डिंग सिचुएशन में उसको कितने अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हो, यही इसकी मतलब एक big ability, a defining ability of the technique, you can say. So the factors that affect it is this: the intrinsic width of the initial level and lifetime of the final state. डिटेक्ट करने के लिए वो सफिशिएंटली जो फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया गया है वो स्टेबल रहना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए डिटेक्टर तक. अगर वो पहुंच नहीं पाया तो फिर तो नहीं होगा डिटेक्शन. आयनाइज होके वहीं पे डिसिलरेट होके रह गया, ऐसा हो सकता है, सरफेस तक आते आते रह गया, उसके बाद उसके पास एनर्जी ही नहीं बची डिटेक्टर तक पहुंचने की. सो द लाइन विड्थ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो एक्साइटिंग लाइट है एक्सरे की, सो ये सैंपल से रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू द एक्सरे दैट यू हैव, द सोर्स ऑफ एक्सरे दैट यू हैव, उससे रिलेटेड पॉइंट है. सो द लाइन विड्थ, जो भी एमिशन होता है उसका एक लैम्डा के टर्म्स में वेवलेंथ का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा सा चेंज होगा. सो दैट line width has to be as less as possible. So ट्रेडिशनल सोर्सेज जो होते थे उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सरे मोनोक्रोमेटर्स यूज किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का को पास कर, दे अलाउ ओनली वन फ्रीक्वेंसी टू द एक्सरेज. इफ दे आर 2-3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो उसको रिजॉल्व करते हैं और ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू पास थ्रू द सैंपल. सो दैट इज द रोल ऑफ एक्सरे मोनोक्रोमेटर. Resolving power of the electron energy analyzer.
So three things. This one is related to the sample, this one is related to the X-rays, and this one is related to the detector. 3 पॉइंट है और ये तीनों डिटेक्टर्स, ये 3 चीज़ें आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस जो XPS स्पेक्ट्रा की एफिशिएंसी, XPS स्पेक्ट्रोस्कोपी की एफिशिएंसी को डिटरमिन करेगा. सो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग इज द सेकेंड फैक्टर. सो ओवरऑल चीज़ों में ओके. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. टाइटेनियम metal. So due to DD splitting, there are two states here. So this appears at 453 electron volts. The second one appears at here. So these are the different d orbitals, different electronic states of the d electrons in the titanium. Okay. Now when this titanium is, it forms titanium oxide, what happens? देखिए the scale is same, 450 का 450 है, ये 470 का 470. So same, with the same scale, what I'm trying to show here is that this one has moved to higher energy, this one has also moved to higher energy. So from here to here higher, ये बाइंडिंग एनर्जी पे चला गया. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में व्हेन द टिटेनियम इज बाउंड टू ऑक्सीजन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दोज d orbitals electrons has increased, and this is the chemical shift that we are talking about. There is shift in binding energy on the scale, and this shift is the chemical shift, effect of chemical environment. So oxidation state, so यहाँ पे टाइटेनियम 0 है और यहाँ पे दिस इज टाइटेनियम 4+, राइट. सो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा, when it is bound to oxygen, the oxygen strongly withdraws the electron, the oxidation state is titanium 4+, and because of that both the binding energy values shift to higher energies. Okay, so this is the state change in state. Titanium 2p half, titanium 2p 3/2 in titanium and titanium 4+. So removing electron becomes more difficult when the Ti4+ is found. Binding energy has increased. So this is the kind of spectrum that is obtained with mgk alpha as the source. This is the source of X-ray. Okay, and this shift is highlighted over here. The first, this shift is highlighted over here, you can see, or rather I should show it like this. So this peak has shifted to here. So clearly effect of binding. So in this manner आप अब जैसे कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन विथ डिफरेंट, what happens to the p orbitals of carbon under different bonding situations. So this is, you can see. So lowest end पे क्या देख रहे हैं? CH4, कार्बन बाउंड टू हाइड्रोजन. हाईएस्ट एंड पे क्या देख रहे हैं आप? CF4, CH4 से CF4. So the binding energy, experimental binding energy 290, 300, so corresponding to this around 400 electron volt से करीब चला गया. So देखिए, so gradually as, so the binding energy of p orbital or s orbitals, whatever orbital that is there, जो उसका बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ता जा रहा है. ऑक्सीडेशन, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंजेस, as the atom binding to the carbon changes, if it is more electronegative, the electron density is withdrawn from the carbon side. Carbon side से electron density हट जाता है, and it attracts the electron more strongly.
and so it is difficult to take away that electron. So CH4 versus CF4, you can clearly see the difference, and more detailed things are here. So in these examples we are considering carbon 1s orbital. So this is the example for the carbon 1s orbital. So जैसा कि मैंने XPS में कहा कि XPS टेक्निक में हम कोर लेवल की बात करते हैं. We are talking about not the valence shells, the core levels electrons which are ejected. So this example is of carbon 1s orbital and how it is affected when it binds to oxygen as in methanol, when it bonds to oxygen as in CO or formic acid, and so on, CO2. So देखिए ग्रेजुअली जैसे जैसे वो मतलब बेसिकली as the atom bound to it withdraws the electron density from carbon side more effectively, जितना जितना इफेक्टिवनेस उसका बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉल का from the carbon side, we will have a greater attraction for the electron 1s electron of carbon. So because of that ये ग्राफ इस तरह का आता है which is almost linear pattern. And similarly we can try for C1s binding energy for organic samples under different things. हाइड्रोकार्बन C, ये वाला C देखिए, CN में तो अमीन में तो यही है, alcohol C. So gradually as you are moving to more and more electronegative atom, 285, 286, 286, so there's slight changes in the increasing order. You can see the increasing order when then CCl bond, then the same 1s orbital is the binding energy is high, CF थोड़ा सा और बढ़ गया, C double bond O again even greater increase. So like this you are finding that this is increasing. So you can see depending on the how carbon is bound to the neighboring atom. So you can see NCO C double bond O 288, एक नाइट्रोजन है तो 288.2, और तब दोनों ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड से तो 289. So जितना more electronegative atoms are getting bound to the carbon, the oxidation state changes, the withdrawal of electron density from the carbon side is better, and so binding energy of 1s electron in the carbon increases. Similarly here urea, you have nitrogen on the either side of carbonyl group, and so when you try to calculate the 1s energy it is higher. Here carbamates C double bond O and C, carbonates with 290, two fluorines bound to carbon atom CH2 CF2 290.6, then 3 fluorine bound to carbon atom CF3 वाले केस में highest values. When you have, so these are the different situations under which, so you can clearly see as the number of CF2 to CF3 में क्या हुआ, number of nature of atom is same but number of fluorine atoms has increased, number of electrons, so that also causes a change in the binding energy. Looking at the oxygen 1s binding energy in carbonyl, look at this oxygen, alcohol, look at the oxygen, ester, look at this oxygen. So gradually you can see that there is increasing. So binding energy of 1s electron in oxygen atom increases depending on these situations. Okay, एस्टर में सबसे ज़्यादा है, जो ऑक्सीजन इधर यहाँ पे है दोनों कार्बन के बीच में, वहाँ पे एस्टर ऑक्सीजन का 1s का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. Okay, so the reason for such things can be
Okay, so this is the basic idea. The electric field Q, V, number of valence electrons, R V is the average radius of valence, R V is the radius of this atom, वैलेंस शेल होगा, नॉट वैलेंस शेल का जो एवरेज रेडियस है वो, सो डिपेंडिंग ऑन दैट you can calculate the electric field, change in electric field environment. So this is the one term, and in addition to that you have interatomic potential. Though atoms, so atom A, I, and atom J, there is a potential difference, so add that difference. So this is, there you are, so change in the uh, things, change in the binding energy will be resultant of both these factors. Number of electrons, so in what radius they are located, and the change in potential. So you can see, yes, C1s, we are again looking at 1s of the electron. So same molecule CS3 groups appear here, CO will appear here. So we are looking at the carbon 1s, and this appears at around 285 CS3 versus C double bond. So depending on highly, so if carbon is bound to oxygen, then the shifts, there's shift on the peak towards higher energy. Binding energy has changed, increased. So similar things happen. Carbon bound to, so we are looking at the C1s, 1s orbital, and CCF3. This one is bound, CC bond, and titanium. When titanium is bound to carbon, this is carbide, titanium carbide, C2 minus. Okay, so C2 is here, ये क्या है, C2 क्या है, 2 minus. So this is your carbide thing, titanium carbide. Then इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तो, so you will have the very, so you can expect lowest. So C1 is energy, binding energy is lowest in this case. C double bond C, it is in the middle, and CH3 when it is bound to carbon, which is bound, so titanium, then C carbon, carbon bond, then CF bond. So this kind of things, variation you can clearly see. Higher 291 to lowest 281. So this kind of difference. Look at this compound, the pictures says it all. So you have carbon in different environment. Carbon 1s, looking at the carbon 1s orbitals of carbon, how they are affected. So इस मॉलिक्यूल में आपको बहुत सारे मिल जाएगा, फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, CH भी है, CH भी दो अलग एनवायरनमेंट में है. So look at C here. So जो CH3 वाला C है, that is appearing at the lowest binding energy. Then the next one is for this one oxygen comes in, so this is here, and यहाँ वाला जो है 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, इधर से ऑक्सीजन, so इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल फ्रॉम द कार्बन साइड इज ग्रेटर, this will appear at higher binding energy. CF3 F F F, so carbon 1s appears at the highest. So एक ही मॉलिक्यूल में इतने तरह के कार्बन की डिफरेंट
तरह की बॉन्डिंग थी, वो सारी सिचुएशन इसमें एनालाइज हो जाती है ना. सो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी इज हियर. So carbon 1 is under different situation. So this is what we mean by chemical shift. Depending on different bonding situation, अलग अलग bonding situation है different atoms के साथ, और even with same atom, जैसे ऑक्सीजन का ही 2-3 situation variation था, उसमें भी आपको different आ रहा है. So you can also see silicon fluorides SiF2, and the higher energy SiF3, SiF4. So if you plot it with oxidation state 0, 0, 1, plus 2, plus 3, and this is plus 4. So जैसे जैसे oxidation state change हो रहा है, the silicon core electrons, core level is moving to higher energies oxidation state change होने के साथ. So this kind of thing is happening. So ठीक है, अब I think this is good enough. So you have now learned the basic application of how the technique works, how the X-rays are generated, how do we apply in characterization of samples. So the area under the peaks, so position of the peaks tell you the oxidation state. Binding energy is also very specific for different elements, different region of energies is there. So you can clearly identify the element. You can also tell the quantity if you analyze the area under the peaks. So then you can also tell about the how much in my sample plus 1 oxidation state of silicon is there, how much of silicon plus 3 oxidation state is there. So that calculation also can be done. So quantitative as well as qualitative, both analysis can be done with XPS. It helps in elemental identification. It also tells you not just identify it, not just helps you in identifying the elements, it also helps in calculate how much it is present and in which oxidation state the element is present in a particular compound. Okay, so that's all. This finishes the photoelectron spectroscopy, and this unit is finished. We'll start with Moss bar spectroscopy in the next few classes tomorrow onwards. कल सुबह में मिलते हैं 7 बजे.